Yes, children. It avails no time, no place, no मतलब he said doesn't matter. समय कितना बीत गया है दो जनरेशन्स के बीच में, किस डिस्टेंस पे आप हम लोग बीच में हैं, हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है, किस प्लेस पे आप हैं, ये सब चीज़ें इट डजेंट मैटर ही सेज। जो जनरेशन्स जा चुकी हैं और जो फ्यूचर में आएंगी, मैं सबके साथ हूँ इस ब्रुकलिन फेरी पे। मैं इस फेरी पे जब बैठता हूँ एक शोर से दूसरे शोर जाने के लिए, तो अनगिनत लोग जो पुराने ज़माने में जा चुके हैं इसके अक्रॉस और जो अब जाएंगे फ्यूचर में, उन सब के साथ हूँ मैं। आई एम equal with all of them. I am with you, men and women of generation or ever so many generations hence, today's and hence future. Just as you feel when you look on the river and sky, so I felt. It's the feeling is the same, the exhilaration is the same, the philosophy is the same. Just as any one of you is one of a living crowd, I was one of a crowd. इस multitudinous crowd में जैसे आप एक चेहरा है, मैं भी एक चेहरा हूँ. Just as you are refreshed by the gladness of the river and the bright flow, I was refreshed. And just as you feel the enthusiasm about this bright river every day, it makes you feel happy. I feel happy too. Just as you stand and lean on the rail yet hurry with a soft swift current, I stood yet was hurried. I mean, आराम से उसके रेलिंग्स के पास खड़े हुए हैं, फेरी जा रही है, बट नीचे करंट तेजी तेजी से दौड़ रहा है, तो उसके साथ हम स्टैटिक भी हैं और दौड़ भी रहे हैं. Just as you look on the numberless masts of ships and the thick stemmed pipes of steamboats, I looked. And he says, on those amazing masts of ships, which sail by, उनके जो वो पतवा वो जो दिखाई देते हैं, वो जो ना दो बड़े वाले जो उनके कपड़ा लगा होता है उसको मैस्ट कहते हैं. एंड थिक स्टेम्ड पाइप्स ऑफ स्टीम बोट्स, और स्टीम बोट्स वो अपने पाइप्स के साथ परफॉर्म करके निकलती जाती हैं. आई टू मैनी एंड मैनी अ टाइम क्रॉस्ड द रिवर ऑफ ओल्ड. मैंने भी इस नदी को जाने कितनी बार पार किया होगा, इस जन्म के पहले भी मैं भी. Watch the 12th moon seagulls, saw them high in the air floating with motionless wings oscillating their bodies. और देखा है इन दिसंबर में जो वो सी गर्ल्स होती है ना, जो बर्फ़ के टाइम में एकदम से वो उनमें दे प्रोक्रिएट एंड दे कम इन मल्टीट्यूड्स इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स. दे आई सॉ दे फ्लोट मोशनलेस मतलब विदाउट एनी, they appear to be static in the sky. They are very noisy though, oscillating their bodies. They are going round and round the ships or the ferry. They are very greedy and they want to pick every bit of food that you have, so they are always moving around where people are. Saw how the glistening yellow lit up parts of their bodies and left the rest in strong shadow. And he says कि वो जब ऐसे घूमती हैं तो उनकी सूरज की जो रोशनी है उनकी ना बॉडीज पे पड़ती है, लोअर बॉडी पे, एंड देन दे ग्लो. एंड ही सेज एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज इन शैडो. आई हैव सीन ऑल दैट. सॉ द स्लो व्हीलिंग सर्कल्स एंड द ग्रेजुअल एजिंग टुवर्ड्स द साउथ. और धीरे धीरे वो स्लो व्हीलिंग सर्कल्स में, एंड देन दे फ्लाई टुवर्ड्स द साउथ. ओके, द स्लो व्हीलिंग सर्कल्स, व्हीलिंग इज round. Okay, saw the reflection of the summer sky in the water, and I have always seen that beautiful pink and orange summer sky reflecting itself in the water of Brooklyn. Had my eyes dazzled by the shimmering track of beams, and so many times my eyes had felt the beauty of the golden color that of the sun that reflected on the beams of the sun that reflected on the water, looked at the fine centrifugal spokes of light around the shape of my head in the sunlit water. Sorry. Looked at the fine centrifugal spokes of light. Centrifugal, it's basically where the or the entire, what do you call it, force, the entire force is in the middle. Centrifugal is where the force is in the middle. The spokes of light, centrifugal means, and coming out, they're emerging out of the center. The spokes of light, the rays of light round the shape of my head, it's in the sunlit water. The sun is reflecting in the waters, and the waters are then they're coming back to your head and eyes, and they're forming a sort of spokes of light, those amazing rays of lights that are coming back to your body. Looked on the haze on the hills southward and southwest, and I've seen those hazy foggy hills. Looked on the vapor as it flew in fleeces tinged with violet. He says, I've seen that water vapor, which that fog, as it flew in fleeces tinged with violet. Fleeces मतलब क्या होता है बेटा?
फ्लीस इज दैट स्मॉल, वो जब अपनी बर्फ़ गिरती है ना तो वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, उसको भी फ्लीस कहते हैं। फ्लीस वो जो लैम्ब की जो वो होती है, हेयर जिससे वूल बनती है, उसको भी फ्लीस कहते हैं। तो इतनी वो जो धुंध है ना, वो बिल्कुल छोटे छोटे पंखों की तरह उड़ रही है, और उसके ऊपर सन की वायलेट वायलेट ब्यूटीफुल पिंक एंड वायलेट रेज गिर रही हैं। लुक्ड टुवर्ड्स लोअर बे टू नोटिस द वेसल्स अराइविंग, और लोअर बे से मैंने शिप्स को आते हुए देखा है। सॉ देयर अप्रोच, सॉ अब्रॉड those that were near me. I've seen how they come near you. I've seen how they are all over the place. Saw the white sails of schooners and sloops. Saw the ships at anchor. Schooners and sloops are, they're the small and big types of whatever carriages which go through the river. And I've seen the anchor, how ships come and then come to a rest after a long journey. The sailors at work in the rigging or out astride the spars. Sailors work at the rigging. Rigging means, better, when they pull their the pulley, and they make it either move in different directions or stop. Okay, the ferry, and out astride the spars, और जो spar, वो जो उसका बाहर का पोर्शन होता है, उस पर astride मतलब दोनों पैर इधर उधर करके बैठे देखा है मैंने sailors को. The sound mast, the swinging motions of the hulls, the slender serpentine pennants. I've seen the round mast. Mast तो आपको everybody knows, वो जो ship के ferry के ऊपर, ship के ऊपर का हिस्सा होता है. The swinging motion of the hull also is the part of the ship, दो उसकी स्विंगिंग मोशन देखा है. स्लेंडर सर्पेंटाइन पेनेंट्स, और वो पेनेंट्स अगेन मैंने वो जो कपड़े के वो जो लगे रहते हैं ना मास्ट्स, उनको सर्पेंटाइन मतलब सांप की तरह ऐसे हिलते हुए देखा है. द लार्ज एंड स्मॉल स्टीमर्स इन मोशन, द पायलट्स इन देयर पायलट हाउसेस. आई हैव सीन दोज फेरीज, आई हैव सीन द सेलर्स पायलट्स इन देयर सिटिंग इन देयर ऑन देयर डेक. द वाइट वेक लेफ्ट बाय द पैसेज, एंड जब कोई चली जाती है ना फेरी तो पीछे सफ़ेद झाग का ट्रेल छोड़ के जाती है, वो सब मैंने देखा है. वाइट वेक लेफ्ट बाय द पैसेज, द क्विक ट्रेमलेस वर्ल्स ऑफ द व्हील्स, और व्हील्स को तेज तेज घूमते हुए देखा है. द फ्लैग्स ऑफ ऑल नेशंस, ही सीन दैट इन अमेरिका, सब सारे नेशंस के फ्लैग्स वहाँ पर. द फॉलिंग ऑफ देम एट सनसेट, और किस तरह से व्हेन सनसेट द wind stops, the flags stop moving. Okay, the scallop edged waves in the twilight, the ladled cups, the frolicsome crest and glistening. The scallop edged waves in the twilight, scallop is a small sea animal. उसकी shape की waves मैंने twilight में देखी हैं. Ladled cups, ladle wale cups जिसमें people are having their food, or people are having their beer. The frolicsome crests, I've seen happy youngsters and people, and glistening, all just lovely, young or old, or just like the crowd, the tumultuous crowd. I've seen them all happy and enjoying. The stretch of far growing dimmer and dimmer, the grey walls of granite storehouses by the docks. And धीरे धीरे जब फेरी उसके दूर मूव करती है, तो जो आप देख रहे होते हैं वो डिमर मतलब और हल्का हल्का पड़ता जाता है. द ग्रे वॉल्स ऑफ द ग्रेनाइट स्टोर हाउसेज बाय द डॉक्स, और जो ग्रे ग्रेनाइट जो स्टोर हाउसेज की वॉल्स हैं, दे बिकम they go as if they're saying bye bye to you. On the river, the shadowy group, the big steam tug closely flanked on each side by the barges, the hay boat, the belated lighter, and the river, the shadowy group. And as the sun is setting, everything is becoming shadowy. The big steam tug closely flanked on each side by the barges. और steam का वो जो steam tug होता है, मतलब बेटा ऐसे it's like a pipe from which the steam comes out, and it's closely flanked each side by the barges. It is फ्लैंक्ड मीन्स बेटा टाइड डाउन बाय द बार्जेस, मतलब बार्जेस को उनसे वो जो बोट्स है ना, उनको एक स्टीम फ्लैंक से सबको बांध दिया जाता है. द हे बोट, द बिलेटेड लाइटर, ये सब द बिलेटेड, द हैप्पी लाइटर मीन्स द लाइट बोट. ऑन द नेबरिंग शोर, द फायर्स फ्रॉम द फाउंड्री चिमनीज बर्निंग हाई एंड ग्लेयरिंग इनटू द नाइट. और नेबरिंग शोर दूर दिखाई देता है कि उनमें उनकी जो चिमनीज हैं उनमें से burning high means उनमें से स्मोक निकल रहा है, because they are melting metal and glaringly into the